Jharkhand is a state shaped by forests, agriculture, and small rural markets. In villages like Kotam and Panso, electricity determines how business survives. अभी से ई उम्र में हम मान लीजिए कि 500-1000 रुपया कमाते हैं एक रोज में, तो कम तो नहीं है। डीजल इंजन वो तो पूरा घर का जगह ले लेता था, उसके लिए एरिया ज़्यादा चाहिए, बेल्ट वगैरह। उसमें ये दिक्कत बहुत ज़्यादा आती थी, बेल्ट टूटते रहता था। अब बिजली का लागत जो होती है, अगर मैं कनेक्शन लूँ उसको कॉमर्शियल वे में, तो 60-70-80 हज़ार रुपये अप्रोक्सीमेटली उतने खर्च आ जाते हैं। Across Kotam and Panso, solar electricity is beginning to replace uncertainty with stability. Panso village lies about 20 kilometers from Gumla town. It is home to around 1,915 residents across nearly 343 households. Like many villages in this region, daily life here depends on agriculture and small local businesses, both of which rely heavily on access to reliable electricity. का कहे अपना बोले कि कितना तारीफ करेंगे इसका। हमारा लिए बहुत अच्छा चीज़ है ये, सोलर से चला रहे हैं। In Panso village, 75-year-old Sudhim Ansari has spent most of his life inside this mill. The rhythm of his days is measured not in hours, but in kilograms of grain. अब मान लीजिए कि लाइन लेते, वो सरकारी लाइन, वो कब का होता है, दिन भर खपल रहता है, और इसमें थोड़ा सा कोनो मिस्टेक हुआ, फ़ोन करते हैं, प्लांट सदी में आ जाता है, तुरंत हमारा 5 मिनट में इस समस्या को सबको दूर कर देता है। फिर हम चलाते हैं। जब अपना मशीन दिए तो हमको चलाने में अच्छा भी लगा, और माने डीजल इंजन से फ़ायदा भी हुआ, इसमें फ़ायदा भी हुआ, और माने हर चीज़ का सहूलियत इसमें मेरा हुआ। Running a diesel generator was not just expensive, it was physically demanding. It had to be started manually, often requiring effort and time. At his age, operating a large machine like this through a diesel engine was difficult to sustain. माने ऐसा सहूलियत हुआ कि अब ये उम्र में हम वो मशीन चलाने के लायक नहीं है, लेकिन बैठे रहते हैं और इंजन चलाते हैं। मान लीजिए कि एक रोज़ में हम जैसे दिन भर में का होता है, तो मेरा बढ़िया से चालू होता है, 1200-1300 रुपया हमारा बिल बनता है, दिन भर चलाते हैं तो माने। और नहीं तो आप मान लीजिए कि पर्व है, एक ठो पर्व है ये, अब इसमें हम 1500-1600 का बिल मेरा जाएगा ना। चलाते हैं, सुबह चलाएंगे, वो शाम को रोकेंगे, चालू रहेगा, दिन भर रहता है चालू। यही है, और इससे फ़ायदा हमको बहुत है हुआ। अभी से ई उम्र में हम मान लीजिए कि 500-1000 रुपया कमाते हैं एक रोज में, तो कम तो नहीं है। अच्छा देहात में माने अच्छा शरीर जिसका है, जवान है, वो नहीं सक रहा है अभी मेरा से। ये मशीन पे चला रहे हैं तो हम उतना अच्छा से कमाते हैं। On busy market days, he now hulls nearly 1,500 to 1,800 kilograms of rice, nearly 35,000 rupees in a month. Today the numbers are clearer. He consumes about 50 units of electricity
on a busy day, around 30 on a regular one, nearly 200 units a week. He recharges roughly for 15,000 rupees a month. It is not free power, but it is predictable. And predictability brings peace. Kotam village lies about 23 kilometers from Gumla town, with over 3,000 residents and 562 households. In Kotam, a father and son run a flour mill powered by solar electricity. Mohammad Hasib Ansari and his son Huzail Arshad operate a flour mill. For them, electricity is not just supply, it is scale. लेकिन जो बड़ा मशीन हम चला रहे हैं तो उसमें 1 लीटर मोटामोटी मेरा 1 से 1.25 लीटर खाता है प्रति घंटा। तो महीने में मान के चले कितना खर्चा आता था आपका अगर डीजल से चलाते? डीजल से हम तो आटा चक्की में खाली या दोनों लेके दोनों का मिला होगा? दोनों लेके हमको देखिए 10 लीटर प्रति डे खर्चा है, 8 से 10 लीटर पर डे खर्चा। तो महीने का कितना हो गया लगभग? मोटामोटी यही मान चलिए 30,000, 28-30,000। तो सोलर पे लगाने से आपको क्या? सोलर से अभी तो इसी को चला रहे हैं, तो फिर ये सप्ताह में कितना रिचार्ज होता है जी महीना में जी? 5-6 हज़ार का रिचार्ज होता है। Hasib Ansari installed a centrifugal flour mill machine through Melinda Foundation's financing support. He paid rupees 22,000 as a down payment, with the remaining cost repaid in monthly installments. उसमें ये दिक्कत बहुत ज़्यादा आती थी, बेल्ट टूटते रहता था। ये फिर मशीन में, फिर वो वाले मशीन में पत्थर लगता था आटा चक्की में, फिर खर्चा भी ज़्यादा आता था। लगभग घंटा में 100 रुपया का वो डीजल पी लेता था। तो हम काम करते थे अगर 5-6 घंटा, तो दिन का 500-600 तो डीजल में चला जाता था। उसके बाद फिर जब हमारे गांव में सोलर लगा तो वो कनेक्शन लिए और फिर वो मशीन हटा करके अभी इलेक्ट्रिक मशीन लगाएं, जिससे हमको कम जगह में भी वो लग गया। बस ये मशीन में सिंपल चलनी चेंज करना होता है और ये इलेक्ट्रिक से चलता है, सोलर से जिसे हम चला रहे हैं अभी। अब मुझे आगे करना है जो अभी चल रहा है मशीन, जो ये एक्सपेलर मशीन है तेल निकालने वाला, वो मशीन भी हम सोच रहे हैं कि सोलर से ही चलाएं। The solar plant supplying power also uses an agrivoltaic model. Crops like urad dal and green peas are cultivated beneath the panels. Land is not taken away from agriculture, it is shared. The success of this mini grid has created attention beyond Kotam. Villages within a 3-kilometer radius have begun inquiring about connections. They have seen the numbers, they have seen the machines running. The demonstration effect is real. Back in Panso, solar electricity is not only powering businesses, it is also shaping the future inside classrooms. Heritage Delhi Public School serves nearly 400 students in this region. In Panso, Saddam Ansari started this school with a simple idea: to improve access to education for children in the village. He had already begun using solar power in his house and for agriculture. When the school expanded, he chose to rely on solar energy, building a system that could support learning without interruption. मिलिंडा फाउंडेशन के थ्रू से जब मैंने कनेक्शन लिया था तो अप्रॉक्सीमेटली 1500-1700 रुपये में मुझे मिल गया था। अगर इसी फैक्टर को अगर मैं देखूँ गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे, तो 60 to 80,000 रुपीज़ खर्च करने पड़ते मुझे, जो कि इससे एक तरीके से हमारे सिस्टम पे थोड़ा सा असर पड़ता है खर्च को लेकर के। तो इस सिचुएशन को कहीं ना कहीं मैं रिबिल्ड करने के लिए अपने स्कूल के लिए उस खर्च को बचा करके मैं सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की तरफ मैं मूव किया, और वहाँ से मुझे बहुत सारे सेविंग भी हुए, और उस सेविंग का यूज़ मैं अपने स्कूल में इसको यूज़ किया।
अभी के समय में हमारे स्कूल में कंप्यूटर सिस्टम भी है, लाइट्स भी हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, फ़ैन भी हैं। तो जितने भी रनिंग मोड में जो भी चल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू से, वो सारे के सारे सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू से ही कंटिन्यू है। और ये एक बहुत बेहतर पॉलिसी भी मुझे लगा। Reliable electricity here is not a luxury. It is essential for daily functioning. Today, the school runs on solar-powered electricity from the mini-grid. Once again, for the school, solar energy means stability and uninterrupted learning. The solar mini-grids in Kotam and Panso are designed to provide reliable and structured electricity to rural communities. In Kotam, the system is a 34 kilowatt peak solar installation completed in June 2024. In Panso, the solar mini-grid has a capacity of 37.6 kilowatt peak, supplying electricity to homes and small enterprises where demand is closely linked to local markets and daily livelihoods. Electricity is delivered through a prepaid system. Consumption is metered, usage is monitored. Behind these systems is an organization working to make rural electricity more reliable. The Melinda Foundation introduced a decentralized solar mini-grid system designed specifically for productive rural use. ये जो 500 ग्रिड पे अभी हम लोग बैठे हैं, ये ग्रिड का कैपेसिटी ऑलमोस्ट 37.6 किलोवाट पीक है। तो इसमें ऑलमोस्ट 400 प्लस कंज्यूमर्स है, जिसमें हम लोग का कुछ कमर्शियल है, कुछ प्रोडक्टिव है, कुछ डोमेस्टिक कंज्यूमर है। जैसे आप लोग फ़िलहाल में मिल चुके हैं सुदीम अंसारी जी से, जो हम लोग का हालर का आटा चक्की चला रहा है, जिसको हम लोग का सबसे पहला कन्वर्शन था डीजल टू इलेक्ट्रिक। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे वेल्डिंग शॉप्स, ग्रॉसरी शॉप्स, क्लोथ्स शॉप्स से लेके छोटा CSC सेंटर, सब धीरे धीरे सोलर में कन्वर्ट हो चुका है। अभी ऑलमोस्ट 500 में 80 to 85% सोलर में कन्वर्ट हो गया है, धीरे धीरे ग्रेजुअली हो भी रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो सोलर ग्रिड का रिलायबल है, हम लोग का सर्विस है और 24/7 आवर्स है, इसलिए कस्टमर इसके ऊपर बिलीव किया है। Kotam and Panso are teaching the rest of India something which is really important, and it is not about just the cheaper electricity but also the reliable and productive use of electricity. But perhaps the biggest lesson for India is that the rural communities are not just waiting for the infrastructure to arrive, but when you give them something that actually work, they runs with it, they invest on it, expand it, they protect it. So the policy need to start treating them as a partner but not just the beneficiaries. CSC is documenting exactly this gap and asking the right questions, because rupees 15 per kilowatt is still a burden for low income rural households. So how do you bring that cost down further? So that is the questions where feed-in tariff and cross subsidy models comes into place. Instead of individual rooftop systems, a central plant generates electricity and distributes it across the village. Power is supplied in a structured manner, enabling commercial activity, not just household lighting. In Kotam and Panso, solar electricity is not simply replacing diesel, it is stabilizing enterprise. For an elderly mill owner, it offers confidence to expand. For a school, it ensures continuity. For a father and son, it reduces uncertainty. In rural Jharkhand, where infrastructure often arrives unevenly, local energy systems are quietly reshaping economic possibility. Solar here is not a promise, it is practice.